Hello, you beautiful soul. Welcome back to my channel, Adi Shakti Tarot. This is Anjani, your reader, and this is not a pick a pile reading. This is not a technical, it's not technically a tarot reading, but it is to help you understand a very important question. you know how do you pick your right reader? How do you know which reader? Do you trust yourself? Do you trust your energy and things like that too? Okay, now this this video has two parts. First one is English and the second half is in Hindi. For my Hindi readers जो हिंदी में ये explanation prefer करेंगे, आप नीचे टाइम स्टैम्प्स में देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा. वहाँ पे जो हिंदी वर्जन रहेगा उसके अलग टाइम स्टैम्प्स हैं, ठीक है. सो वट एवर लैंग्वेज यू फील कंफर्टेबल विथ, यू कैन गो listen to it like that. Okay, starting off with a disclaimer, you can read whatever is written there. Okay, now three important disclaimers that are not in the text. First one is I'll be sharing examples from my own practice, but they're not for self promotion. It's just help you to understand this concept better and sort of realize that experience is a bridge. Okay, I'm using it as a bridge on connecting the knowledge with real life examples. I'm not trying to, bring myself in the spotlight, or, I'm boasting myself or anything like that. Okay, now remember, these points are not absolutes. Doesn't mean that if I've said something that's a red flag and maybe your favorite reader has them, right? So it's not necessarily that your reader is a red flag. Okay, go ask them. Any genuine reader wouldn't mind answering your questions. Some even enjoy you wanting to know more about them. Okay, and again, if you're unsure, just like you go to a doctor and you hear something you don't like, you go to another doctor getting a second opinion, right? Same thing here, get a second opinion. We're not your girlfriends and boyfriends and partners, right? So like if you go to another reader, it's not like you're cheating on us. Okay, it's not you being disloyal or anything like that. It's making you an informed decision maker. Okay, let's get right into it. um, let's start with what to expect in this video. Okay, we'll be discussing how readings happen, how in general how a reader reads tarot, how a reader gets the information and shares it with you. Okay, then we're going to discuss why picking the right reader is important, and what are the karmic implications of getting a reading. What are the red flags in a reader? Okay, what to look for in a reader. Like if I say this is wrong, I should always tell you what's right as well, right? Now, after that, we'll be looking into if you're a reader, if you found yourself in the red flag list, okay, how can you correct yourself? And, a gentle wrap up of the entire session, and we'll do this again in Hindi for those of you who prefer Hindi. Okay, now let's start with the process of reading and what do you need to know as a reader, someone who's learning how to read tarot, or someone who's interested in it, an enthusiast, or someone who regularly gets readings. Okay, now every reader works differently. Okay, now every reading starts with consent. Some readers require you to give open consent, like, do I have your consent, right? Some readers have work on, what would be the right word here? Some readers, consent is implied, right? Like you come into my chat, for example, right? You say, hey, can you tell me about this, right? That is consent. You are wanting to know, like you've given me your consent
to read for you, right? Now, if you've clicked on a pick a pile reading, for example, right, if you're opening a paper and you're reading these zodiac predictions, horoscope, whatever, right, that is you giving your consent. Okay. Now, what it what consent does is it lets your spirit guides, God, your own energetic field, depending on your belief system. Okay, it gives your team an indication that you are open to this person. Okay, now the reader sometimes asks questions like, do you have a question, would you like a general, or sometimes they just pick cards for you based on what they think you need. Okay, now readers often, after they receive a question, they ask their spiritual anchor. Okay, now every reader has a different spiritual anchor. Some of them, believe in God. There's a specific deity they worship, right? Or they believe in universe, spirit as a whole, right? Some of them believe in angels. Some of them ask your spirit guides, right? Some of them have their own intuition as an anchor, right? That's not wrong. It's just that you are asking the universe within you. Okay, so like I said, every reader is different, right? Now, after this happens, the reader starts channeling. Some readers channel before they've picked cards, some readers channel after they've picked cards. But for most readers, they start receiving the downloads, the information already. Okay. Now, once the cards are drawn, they start. It's like for most of the readers, at least the ones I've interacted with, they believe cards are like a string. Okay. Now, readers have their own compass. Okay, their own way of channeling and everything, right? Like often I sing songs as channeling, right? You like if you've gotten a reading from me, you would know that like you asked me a question about, how is XYZ feeling about you? And I'm singing songs like this person wants to sing the song for you. You listen to this song, imagine this person singing for you, right? Now, what do cards do? They become a physical anchor to these messages. Okay, now all these messages are like floating around in bubbles. Okay, for example, they're like balloons filled with helium around you, they're like floating away. Now what does the card do? It sort of becomes the thread that helps you hold on to those messages, to those balloons. Okay, now the tools can be different, right? Like some people channel through wax, right? Some people prefer tea leaves and all of these things, right? Now when you give consent, you're open to the connection, and you're open to the messages that come through. Okay, now, why picking the right reader is important. We're coming to the more, important part of this whole thing. Okay. Now, not every reader is spiritual, unfortunately, right? Not every reader is protected. Not every reader is doing it for the right reasons. Okay. Not every reader out here is treating it with the importance that it needs to be treated with. Okay, like how if one person is doing something on the internet, everyone thinks it's like a vibe, it's a whole thing, let's do this. I'm going to copy that person, I'm going to do this, right? So not everyone is as informed or as aware of what they're doing. Okay, so now, like we've discussed before, right? Um, We've discussed this before, right? Like when you ask for a reading, you're giving consent, right? You're giving consent for the reader to access your energy and look into whatever's happening, right? Now, before the reading happens, there's a lot of things that a reader does. Like, some of them light candles, some of them light diyas. Like, for example, I put the idol of my goddess in front of me, right? I welcome her into the energy. I pray, and
I always pray that, Ma, come to me, speak through me, help me guide all these people towards their, higher selves, and let every message that comes through uh, take them to the best versions of themselves and guide them towards wherever they're meant to be, right? In the best way possible. And that is just, I'm sharing this practice again, not to sort of put spotlight on myself, but I'm giving you examples. Okay. Now, this is right before we start reading, right? Now, the decks need to be charged as well, right? If you've been to my hand cam streams, you'll see all the decks I have, right? I've got multiple decks. So every time I start a reading, like I start a stream, I get prepared for a stream, I'm picking what deck aligns with the energy today. Like in between readings as well, I've changed decks, right? And I'm sharing personal practices. These practices are different for each individual reader, again, right? And these examples are to help you understand that a lot of things happen even before you're reading, and not every reader is looking into these things, right? So again, this is my attempt to, give you these informations to enlighten you, right? Not to scare you. Again, I'm not trying to scare you away from your favorite readers, and I'm not trying to like bring you to me like, oh my god, I'm so amazing. Okay, it's just to make help you make informed decisions, because again, now a lot of people have sort of entered the healer community, the reader community, whatever you want to call it, right? And not everyone is doing it for the right reasons. Some of them are doing it for the money, like the fame, it's got a lot of scope. I also stream on Twitch, so I've seen a lot of streamers who are just doing it. They picked the niche tarot because not a lot of people visit, like there are not a lot of streamers on tarot, right? And a lot of the times, like all of you don't come to me when you're happy, right? Like most of the time you're coming, you need guidance when you're stuck somewhere, right? You're in a very spiritually vulnerable position, and in these positions it's very easy for someone to take advantage of you. So as a reader, as your guide, as your friend, it is my responsibility to, show you what a genuine reader is, right? And again, to make informed decisions about crucial uh, these crucial what would be the right word here, decisions you make, right? Now, like the decks need to be picked, the person needs to be cleansed, the reader, right? Because again, not every reader is protected, not every reader is spiritual. The cleanse happens, you're welcoming energies, you're dealing with a lot as a reader. You become the bridge between who you're reading for, their guides, and your own intuition, right? You're bringing celestial knowledge into the physical world. So it's a lot of responsibility, and you cannot just do it out of joy, or you thought that, people earn a lot, right? So it's a sacred responsibility. So when you give consent to a reader, the reader gains access to your space, your energy, your emotions, your aura, right? This is why, remember, if you've been to my streams or like my pick a pile readings or anything, at the end of the stream or the reading, I always say thank you so much for trusting me with your time, space, and energy, right? It's not just because I like saying it, because it's like a long sentence, right? It is not just symbolic, it's real, because I'm thanking you for trusting me with your
time, your energy, and the space you take, right? And these things are not to be just overlooked. Now, these are sacred responsibilities someone takes up, and it's very humbling as well. But you also have to be very aware of, doing all of this. Okay. Now, not every seeker here is doing meditation and protection, right? Like when you come and ask questions, right? You're not sitting there hours meditating. You're not sitting there in the morning, evening, asking your gods, your deities for protection, right? You're very vulnerable when you ask for a reading. Okay. You're very prone to things like the reader's energy as well, right? That's why, when you're around certain readers, there's a lot of fear that builds on you, right? And some readers just calm you down, right? So, when the wrong person taps into your energy, it's not just that, it's going to be a wrong prediction, and it can leave you confused and like panicked, or like makes you spiral, but it's also draining you energetically. Okay. Because some readers are ungrounded, they're dealing with their own instability, their own ego, their unhealed trauma, and all of these come through your readings, and it does more harm than help. Okay. Now, as a reader, we must, not just study spirituality, but also understand things like psychology. Okay, because now I think I've said this in my streams as well. If you've been here, if you've like been to my channel before, um, I read psychology so that I can understand when you need medical support or when you need spiritual support, right? Now, if you're going through something psychological, right? If you're struggling from a psychological condition, and if your reader is also mentally unstable, I'm sorry if I'm using triggering words, but I am uninformed in that aspect. Okay. But yeah, it'll just make things worse for you, right? I've personally come across so many streamers, these readers who are these red flags. That's why, it's important to be informed, right? Now, what are the karmic implications of readings? Okay. Now, I've talked about how it can affect you mentally, right? Now, when you open yourself up to a reading, okay, if the reader is not protected, okay, if the reader is not spiritually active, the reader often has hooks in their own aura. They also have energetic energy vampires and all sort of things, right? So even in that brief moment of vulnerability, you open yourself up to all these spiritual attacks. Okay. Again, I'm not trying to scare you, but it's just the reality of things. And I'm not scaring you, I'm informing you, and I want you to make informed decisions. Hence, here we are. Right now, it's not just that the reader, whatever they're dealing with, comes to you, but it's also that, when your energy is drained, when you're in a quote unquote low vibration, what you feel is what you attract, right? So when you're in a low vibration, you're also going to attract things in low vibration, so that's why a lot of people fear readers, right? Like witchcraft and all of these things. This is why the ill luck they talk about, it's because, you go to the wrong readers, you experience all these things because, the reader is not responsible, you've picked the wrong reader and all of that, right? So informed decisions are important, right? um what would be the red flags in readers? We've talked about how it could affect you. Now, these are a few ways
where you can spot if a reader is wrong for you. Okay, now a disclaimer here, sometimes, whatever about to say, a reader can have a few of these, but how to explain this? Uh, like, you don't know a reader well enough, right? And you look at this list and you're like, oh my god, this reader has that. So when in doubt, always ask the reader. If it's someone genuine, they'll be more than happy to open up to you, to share their practices. Okay, so the first biggest red flag I've seen, and I've heard from people, is a god complex in readers. Okay, like, I'm God, Ma Kali comes to me, she sits in me, I am Kali, and I am God, and all these things. Okay, if they're speaking all of this out of ego, it's a huge red flag. Okay, if you're that spiritually awakened that you see your ultimate form, what the hell are you doing here? But also, it's a very humbling experience. You don't speak all of this out of ego, so that is a red flag. If someone says, you know what, I can fix this for you, and you just have to buy this course from me, and or get this healing, or I can take you to the underworld or whatever, red flag. Okay. Now, they lack transparency. Next point would be they lack transparency. They're not open. They're just like, trust me, right? Just trust me, and things like that. Now, there's a difference between privacy and secrecy. Like, for example, me. Okay, I don't often show my cards because I think I've explained this before, that when I read, my goddess's idol sits there, and it's a private idol. I don't show it to anyone and everyone. So it's a big no-no, right? Putting her out in the internet. Now, I'm sure you've seen an idol's photo on my Instagram. That is a more public idol I have. The private one, even my family's not seen it, right? So that is like, I don't show my face, okay? And oftentimes I don't show the cards, but I've done hand cam streams, right? It just energetically, it didn't work for me, right? But if someone's been here before, they can tell you. If you want to know what cards came through, I will tell you. I'm not hiding it from you, right? All you have to do is ask. Now, if someone's like, no, just trust me, bro, red flag. Okay, there's a difference between secrecy and transparency. Now, there's no clear boundaries when they give you advice. Okay, like, they're just, um, how do I say this? Like, sometimes, important things come through, and as a reader, we have to say them. But many times, these readers just give out these random messages, advices, warnings, right? They're forcing things on you. Like, you didn't ask for it, but they're forcing you. Now, again, forcing can have multiple uh I don't know what's happened today. I keep forgetting the right words. Now, for example, when doing a reading, right? A reader sees that, your partner is very toxic, and you keep asking if that person will come back to you and all of this, right? And if the reader says, no, this person is toxic, not good for you, you could do so much better, and, gently guiding you, helping you coming out of that situation, that is not a red flag. Okay, but if that person is like, no, you know what, this is terrible for you, you have to come to me, and just sort of creating a fear in you,
their entire reading is based on trying to sell you something, upselling you something, like, buy my course, buy my reading, and all of that, right? Red flag. Okay. When they create fear or confusion in the name of truth. Now, a lot of readings could be negative, right? If your question is like that, a few negative things can come out. But if a reader is like, oh my god, no, you've got these 50 ghosts lingering around you, they're like draining you, you have to get this like cleanse, you have to do this, you have to do that. When they're creating more, confusion, if they're not giving you like a clear answer, or if they're, just creating fear, red flag. Okay, they're constantly triggering, they get triggered, or they create triggers, right? Now again, if you're dealing with something, and if something a reader says triggers you, sometimes it could be the reader's fault. That is something you'll have to see. But if the reader keeps getting triggered, right? If the reader is not grounded, if every little thing you say, like if you say, hey, this is not resonating with me, and the reader is like having a full blown panic attack, red flag. Okay. um that brings me to the next red flag, which is no accountability. They don't admit when they're wrong. Okay. There's no shame in being wrong, right? And it's not something terrible as well. Like, tarot is not 100% accurate. Okay. So sometimes they can be wrong, but when you bring this up to them, instead of taking accountability, they're like, nah, I could never be wrong. you know Now, again, this is a double-edged sword. They could trust their deity so much that they're like, no, that deity could never lie to me. Or they're just, delusional. That is something you'll have to see. Okay, you'll have to see who the reader is grounded in. Okay, now here is a little heavier red flag, which is spiritual psychosis. Okay, they're not grounded in the real world, they're living in their own delusional world, and they're trying to pull you into that delusion as well. Like, you know what, this is happening, the world is going to end in this year, or like, again, the very angle of, I am God, I'm this, I'm that, and something which is not grounded in reality. Okay, they're feeding you delusion. you know if they're building on your delusion, or if they're not, if like you're not delusional and they're creating stories that sound delusional, red flag. Okay. Now, another thing would be, if they're mentally unstable themselves. Okay, like I think I've said this before, but I'll repeat it because it's very important. Because I've seen a lot of readers who are like that, and I'm sure you've experienced them as well. Like a lot of these readers create panic in you, right? They're building up stories that don't make sense. Their practices feel very scary. Their deities, they're very secret about it. Like sometimes it's required in the practice itself, right? There's also cultural appropriation. That is something you should be should consider a red flag. Like, a lot of people don't understand how certain cultures deities work, and they pretend that they're working with that deity. Like, this is very common when it comes to the Greek, you know like the Greek gods and goddesses. Like, these people are like, oh, I'm working with this god and goddess, but you don't see like an actual, um
You don't see how they could be connected to it. Again, this is why I say ask those questions. Like, it's okay to ask your reader, like, hey, how did you get connected to that deity, if there's a cultural difference. Because a lot of these time, a lot of these readers often say they're connected to a certain deity out of they're just doing it to be a rebel, right? Because they grew up in a household where certain deities were demonized and all of that. That's why they feel attracted towards that culture, and they've just sort of adopted it without really understanding it. Okay, so be very careful of that. Now I've showed you what the red flags are. Let us look into what to look for in a reader. Oh my god, that is a lot of information. Like my head's spinning. Now, what to look for in a reader is quite opposite of all the red flags. Okay, a reader who is transparent. Okay, when you say the reader is, when you ask the reader a question, okay, they're open, they want to answer it. Now, I'm not asking you to, go ask them credit card details, and the reader is like, hey, no. And you're like, oh my God, this reader is not transparent. Now, bestie, don't be like that, okay? Transparency related to practice, okay, related to your reading. No, trust me, bro energy. Okay. Now, accountability. If this reader thinks that, they're wrong somewhere and they own up to their mistakes, a big green flag. This is someone you should, you know, go to. Another important thing is having an ethical and moral compass. Okay, they know what morality is, they know what's ethical, what's not ethical. So they like don't So, uh, when you say like, "Hey, I feel like this," should I be toxic to this person? Should I be toxic to that person? And all of that, right? And that reader is like, "Hey, you know what? Let karma do its job. Let karma do its job. Don't interfere. You do your thing, right? Let nature find its course and all of that, right?" So, a very grounded, ethical, moral person. Okay, someone who has boundaries. Not every reading needs to be done. If something makes them uncomfortable, they're like, no, don't do this. Because when there's someone else coming in, intruding, okay, disturbing a reader's energy, now, in a reading, for example, my stream. Okay, now all of you have come to me trusting me to take care of your energies, right? Now, if there's someone disrespectful coming into the stream, it is my responsibility to remove them. Okay, because that will affect all of you. So, I am taking responsibility for your energy, right? Someone who knows how to enforce these boundaries. Okay, now another thing would be someone who's knowledgeable. Okay, someone who knows what they're talking about, not just like, oh, this, oh, that, like they're not dramatic about it. Like I get it. Sometimes, the style of reading is being dramatic, but there's also another thing that, it needs to be grounded again. They just don't pull it out of the sky, spinning it in, all these glitter and gold and everything, like these clouds and all of that. So very grounded readings. Okay, that brings me to the next point, a very calm and grounded energy. Okay, a reader you feel safe with, a reader you feel safe trusting your energies with. Because when you go to a reader, not only are you trusting that reader with your present self, you're also trusting that reader with the baby you and the old you. Okay, and the right reader will always honor your journey. They're not going to make it about themselves. Okay, sometimes they may bring up their stories to give you an example, but if someone is always about me, 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 that could be a sign of narcissism. Okay, but again, ask the reader, because a lot of the times readers give examples of themselves in hopes that the stories may resonate with someone,
and give that person insights. Okay, now to my fellow readers who may have seen a few practices of them on the red flag list, okay, I want you to know that doesn't make you wrong. Okay, doesn't make you a bad reader, because again, we are all humans, we make mistakes, like I've made them myself. Okay, I've like if you go to my Instagram and click on reviews, you'll see the times I've not resonated with, my clients, people I've read with, and I've kept it there as a proof that, I'm going to be held accountable for everything I do. Now, I've made these mistakes. That's why I know it's a red flag, right? Now, I'm not saying I'm the all knowing, right? I don't know a lot of things and I'm still learning. And it's okay to learn. We all make mistakes. Don't let these red flags turn you off like, hey, I'm not a good reader, right? The very fact that you've sat through this video, hearing all of this, not clicking away after you found the red flags is a sign that you want to do better, right? So when you read for people, right, these people are trusting you with themselves, okay? They're trusting you with the baby them, the very grown up them, the old them, the in their vulnerable moments as well. They're trusting you. So what's more important is that we correct ourselves, we show up, you know, we keep showing up for our people. We we hold ourselves accountable, right? And we become better for them, right? If something doesn't work out, it's okay to apologize. You have no idea how forgiving these people are, right? Because imagine if they can forgive their ex 50 times, they can forgive you one time, okay? It's not a big deal. What's important is you see a mistake and you want to become better, okay? Now, thank you everyone who's heard this in English. I hope the read. I hope this was insightful for you. Now, I'll be moving on to the Hindi. जब एक रीडर पिक करते हो, ठीक है, आप किसी से टैरो कार्ड रीडिंग ले रहे हो या कोई भी टाइप की रीडिंग ले रहे हो, ठीक है, तो आपको किस चीज़ों के बारे में ध्यान रखना चाहिए, आपको क्या क्या देखना चाहिए, क्या अगर कोई रीडर कुछ कर रहा है और आपको लगता है कि ये गलत है, तो क्या वो एक्चुअली गलत है या आपको बस लग रहा है? हेलो, दिस इज़ अंजनी फ्रॉम द आदि शक्ति टैरो। आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि आपको कैसे टैरो कार्ड या ओरेकल रीडर्स से अपनी रीडिंग्स करानी चाहिए और कैसे रीडर्स से नहीं करानी चाहिए, ठीक है? पहली बात तो ये है कि मैं जो भी एग्जांपल्स दूंगी खुद के, ये इंटेंशन से नहीं दे रही हूँ कि मैं खुद को बढ़ाऊँ, ठीक है, कि लाइक मैं कितनी महान हूँ टाइप्स, ठीक है। दिस इज़ कि आप समझ पाओ कि एग्जाम्पल्स के थ्रू कि आप समझ पाओ कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। हर रीडर बहुत अलग होता है, तो जैसे मैं रेड फ्लैग्स बताऊंगी, ये नहीं समझना है कि हाय मेरे फेवरेट रीडर ने ये किया तो यानी वो रीडर ही ख़राब है, ठीक है। अपने रीडर से ये क्वेश्चंस पूछ लेना अगर आपको शक हो तो, ठीक है, क्योंकि अगर वो जेन्युइन रीडर होगा तो उसको अच्छा लगेगा कि आप उसके बारे में कुछ पूछ रहे हो, यानी उसकी रीडिंग्स के बारे में कुछ पूछ रहे हो, ठीक है। ये नहीं कि उसका क्रेडिट कार्ड डिटेल्स वो सब आप मांगो और ये एक्सपेक्ट करो कि हाँ वो बोल देगा ठीक है। एंड अगर आपको कभी भी लगे कि आपका रीडर आपको गलत जवाब दे रहा है, तो जैसे आप डॉक्टर्स के पास भी ना, अगर आपको लगता है कि एक डॉक्टर ने गलत बोला तो आप दूसरे डॉक्टर को दिखाते हो, है ना? वैसे ही एक रीडर का रीडिंग गलत लगा तो आप दूसरे रीडर के पास भी जा सकते हो, ठीक है। ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ मैं ताकि आप सोच समझ के एक रीडर को चुनो, ठीक है। नाउ आगे मैं आपको क्या क्या बताऊंगी उसके बारे में एक बार देख लेते हैं।
ठीक है, कि कोई भी रीडर रीडिंग कैसे करता है। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए नहीं है जो रीडिंग कराते हैं, ठीक है, ये वीडियो उनके लिए भी है जो रीडिंग्स करते हैं, जो रीडिंग्स करना चाहते हैं या जो रीडिंग्स सीख रहे हैं, ठीक है। अम, हम समझेंगे कि रीडिंग्स कैसे होती हैं, ठीक है, क्यों सही रीडर चुनना ज़रूरी है, ठीक है, ये गलत रीडर चुनने से या रीडिंग्स करवाने के कारण आपकी कर्म पे क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है, ठीक है। जो रेड फ्लैग्स होते हैं रीडर्स में कि रीडर्स को क्या नहीं करना चाहिए, और अगर वो रीडर कर रहा है तो शायद से आपको वो रीडर से रीडिंग्स नहीं करानी है, ठीक है, वो लिस्ट भी देखेंगे, ठीक है। फिर ये भी देखेंगे कि क्या रीडर्स, आप जब एक रीडर को ढूंढते हो तो वो रीडर में क्या क्या गुण होने चाहिए, ठीक है। और फिर हम देखेंगे कि अगर आप एक रीडर हो और आपसे इनमें से कोई भी गलती हुई है तो आप कैसे उसको सुधार सकते हो, ठीक है। और फिर हम वीडियो को ख़त्म कर देंगे। नाउ शुरू करते हैं कि रीडिंग कैसे होती है और आपको उसके बारे में क्या जानना चाहिए, ठीक है। हर रीडर ना अलग काम करता है। पहले तो ये नहीं कि हर रीडर एक ही तरीके में बात करेगा, एक ही टाइप की रीडिंग में करेगा, लेकिन दिस इज़ अ जनरल प्रोसेस, ठीक है, जो यूजुअली जनरल में होता है। हम्म अ, हमेशा एक रीडिंग का फर्स्ट पॉइंट होता है एक कंसेंट, ठीक है, आपकी इजाज़त, आपकी परमिशन कि हाँ, आपके जो भी गाइड्स हैं, भगवान हैं, आप जिनको भी मानते हो उनको आप बता रहे हो कि हाँ, मैं ये इंसान से आप ये इंसान से बात करो, ये इंसान मुझे आपकी तरफ से जो भी गाइडेंस है वो देगा, ठीक है। नाउ ये हो गया कंसेंट का बात। अब कंसेंट कैसे देते हैं? कई रीडर्स क्या होते हैं ना, सामने से पूछते हैं कि क्या आपको ये रीडिंग करानी है, क्या आप कंसेंट करते हो, ठीक है। कई रीडर्स इम्प्लाइड कंसेंट से काम करते हैं, मतलब कि आप भले ही अपना कंसेंट ऐसे बोलो नहीं कि हाँ मैं कंसेंट करती हूँ, ठीक है। कई बार क्या होता है ना कि आप जब क्वेश्चन पूछते हो इसका मतलब है कि हाँ, आप ये इंसान को ट्रस्ट करते हो अपनी एनर्जी के साथ, ठीक है, आप चाहते हो कि ये इंसान आपको इन्फॉर्मेशन दे, ठीक है। वो होता है इम्प्लाइड कंसेंट। अब कंसेंट आप जब नाम, कुछ रीडर्स कैसे कनेक्ट करते हैं, आप नाम दो तो बस है, ठीक है। कई लोग डेट ऑफ बर्थ मांगते हैं, ठीक है। कई लोग क्वेश्चन मांगते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि आप बस आ जाओ, आपको जो भी सुनना है वो बोलेंगे, ठीक है। अब पहले तो आपका जब क्वेश्चन मिल जाता है तो जो रीडर होता है वो जो भी उसका स्पिरिचुअल एंकर होता है, यानी कई रीडर्स क्या होते हैं, भगवान को मानते हैं, है ना। कई रीडर्स एंजल्स को मानते हैं। कई रीडर्स खुद के ही इंट्यूशन या साइकिक पावर्स को यूटिलाइज करते हैं, है ना। तो वो होता है एक स्पिरिचुअल एंकर। वो भी जानना ज़रूरी है कि आपके रीडर का स्पिरिचुअल एंकर कौन है, ठीक है। फिर होता है कि कार्ड्स पिक करने लगते हैं। कई लोग क्या करते हैं, जंपर्स लेते हैं, जब शफल करते हुए जो कार्ड्स कूद कर आते हैं उनको लेते हैं, ठीक है। कई लोग शफल करते रहते हैं फिर अपनी मर्ज़ी से कार्ड उठाते हैं, यानी मर्ज़ी मतलब जो भी उनका प्रोसेस है, ठीक है। ऐसे कई वेज होते हैं, ठीक है। अगर आप एक टी लीफ रीडर के पास गए, ठीक है, उनका मीडियम रहेगा चाय की पत्ती, है ना। कई वैक्स से रीडिंग करते हैं, कैंडल से, है ना। तो जो भी उनका मीडियम है, ये नहीं है कि जब वो मीडियम से कनेक्ट करेंगे तभी उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। कई रीडर्स को पहले ही इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि शफल करते हुए। जैसे अगर आप मुझसे रीडिंग कराते हो, मैं कई बार आपका जब क्वेश्चन आता है, जब शफल कर रही हूँ, कई बार गाने चैनल कर देती हूँ, है ना, कि ये इंसान आपके लिए ऐसा गा रहा है ना। फिर देखो, उनका चैनल करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन एंड ऑफ द डे बेस तो वही होता है, ठीक है। तो जब आप
एक कंसेंट देते हो कि हाँ मुझे आपसे रीडिंग करानी है, उसका मतलब होता है आप अपनी एक परमिशन दे रहे हो अपने रीडर को, ठीक है, कि आप मुझे इसके बारे में बताओ। अब देखेंगे कि क्यों ज़रूरी है आप एक सही रीडर को चुनो। अब जब रीडर की बात की जाए तो कई सारे रीडर्स होते हैं, है ना, कई सारे तरीके होते हैं उनके रीडिंग करने के। और सही रीडर चुनना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि देखो सब रीडर्स ना स्पिरिचुअली उतने इवॉल्व्ड होते नहीं हैं, ठीक है, स्पिरिचुअली उतने रेडी होते नहीं हैं, उतने प्रोटेक्टेड भी नहीं रहते, और सब सही रीजंस के लिए करते भी नहीं हैं। देखो जैसे वो होता है ना वायरल ट्रेंड्स की, एक इंसान कर रहा है तो भेड़ की चाल चल के सब वही करेंगे, है ना। तो कई बार ये रीडर्स यही खुशी में लाइक कि हमको पैसा मिलेगा, फेम मिलेगा, ये इंटेंशन से करते हैं, ठीक है। तो ये जानना ज़रूरी है कि आपका रीडर ये रीडिंग क्यों कर रहा है। क्या वो एक्चुअली गाइड करना चाहता है, या वो बस ये पैसे फेम के पीछे पड़ा है। जब आप एक रीडर को अपना कंसेंट देते हो कि हाँ मुझे आपसे रीडिंग करानी है, तो आप अपना एक्सेस दे रहे हो, ठीक है। वो आपकी एनर्जी जानता है, आपके इमोशंस पढ़ सकता है, आपके ऑरा को फील कर सकता है। तो जैसे मैं देखो हर रीडिंग के बाद या जैसे एंड ऑफ द स्ट्रीम या एंड ऑफ द पिकअप आइल रीडिंग्स में बोलती हूँ ना एक सेंटेंस, थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग मी विद योर टाइम स्पेस एंड एनर्जी। ये बस ऐसे बोलने के लिए नहीं होता है, रियल में भी होता है, ठीक है, क्योंकि आप मुझे अपना समय दे रहे हो, ठीक है। अपने मैंने कंसेंट की बात की थी ना कि आप जब हाँ बोलते हो तो तब मुझे एक्सेस मिलता है, ऐसा नहीं कि मैं बैठे बैठे किसी का भी रीडिंग कर लूँ, है ना। तो एक वो कंसेंट के साथ ना आपका एक वनरेबल हो जाते हो, आप ओपन हो जाते हो, ठीक है। जैसे होता है ना कि सोचो आप, आपका कंसेंट ना आपका पासवर्ड है, ठीक है, आपके वाईफाई का पासवर्ड है। तो जब आप हाँ बोलते हो तो मुझे या किसी और रीडर को उसका पासवर्ड मिल जाता है आपके वाईफाई का। अब हर रीडर तो उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज नहीं करेगा ना। कई रीडर्स सोचो आपका वाईफाई पूरा यूटिलाइज कर देंगे, खूब सारे डाउनलोड कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। कई बार ना आप देखो, मैं जनरल में बोल रही हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी रीडर उठ के बैठ के बोलता है कि आज मैं रीडिंग करूँगा, यानी करते हैं लोग लेकिन क्या होता है ना कि रीडिंग करने से पहले भी कई सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। जैसे कि मैं, ठीक है, मेरी माँ की जो मूर्ति है माता रानी की, दुर्गा माँ की, वो मूर्ति मैं सामने बिठाती हूँ, है ना, कि माँ मैं अब फिर मैं प्रेयर करती हूँ कि माँ मैं अपना अब स्ट्रीम स्टार्ट कर रही हूँ या रीडिंग कर रही हूँ। माँ मेरी वाणी में बैठना, माँ लोगों का मार्गदर्शन करना, माँ मुझ उनको ना उनकी मंजिलों तक पहुँचाना, उनके लिए जो भी अच्छा है उनको उसकी तरफ जाने के लिए प्रेरणा देना, है ना। ऑल दीज कम इन प्रेयर, ठीक है। स्टार्टिंग होता है, दिस इज़ लाइक दिस इज़ हैपनिंग बिफोर द स्ट्रीम, ठीक है। जब रीडिंग होती है उससे पहले या कई रीडर्स आपकी रीडिंग आपके सामने ये प्रेयर करते हैं, ठीक है। तो एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं, है ना। इससे पहले भी कई रीडर्स क्या करते हैं, मेडिटेट करते हैं, ठीक है, पूजा करते हैं, जो भी आप मानो, जो भी वो रीडर के बिलीफ सिस्टम हो, ठीक है। वो मेडिटेशन करते हैं, क्लेंजिंग करते हैं, खुद को पूरा प्योरीफाई करते हैं ताकि उनकी एनर्जी के कारण आपको कुछ ना हो, ठीक है। अब जो टाइम पास के लिए कर रहा है वो तो ये सब नहीं जानेगा ना। इसलिए ज़रूरी है कि आप एक सही रीडर को चुनो, ठीक है।
कई रीडर्स क्या होते हैं ना, थोड़े इमोशनली अनस्टेबल होते हैं। अगर आपने ध्यान से देखा होगा, कई रीडर्स ना बहुत चिड़चिड़े होते हैं, ठीक है, थोड़े पागलों की तरह हरकत करते हैं, थोड़े सन की काम करते हैं, है ना। सोचो, वो रीडर जिसका एनर्जी खुद वो संभाल नहीं पा रहा है, आपको कैसे गाइड करेगा, है ना। और कई बार ना, एज रीडर्स हमको ये भी सीखना होता है कि हमको ये टैरो वो सब तो सीखना पड़ता ही है, लेकिन हमको साइकोलॉजी भी सीखनी पड़ती है, ताकि हम समझ सकें कि आपको मेडिकल ज़रूरत है या आपको स्पिरिचुअल ज़रूरत है। ठीक है, मैंने खुद पढ़ा है, इसलिए बोल रही हूँ कि देखो, कई बार ना, आई थिंक अगर आप लोग मेरे स्ट्रीम में आते हो बहुत बार, आपने मुझे ये सुना भी होगा बोलते हुए कि मुझे साइकोलॉजी पढ़ती हूँ, मैं खुद को अपडेट रखती हूँ। क्यों? ताकि मैं डिफरेंशिएट कर सकूँ कि आपको कब एक डॉक्टर की ज़रूरत है, कब एक रीडिंग की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपको डॉक्टर की ज़रूरत है और मैं रीडिंग में कुछ ना आड़ा टेढ़ा बोल दूँगी या आपके लिए अच्छा नहीं होगा, तो आपकी हेल्प करने की जगह आपका काम बिगाड़ दूँगी मैं, है ना। तो वो एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है एक रीडर के ऊपर, और ये रीडर्स जो टाइम पास के लिए बैठते हैं ना, कई बार ये समझते नहीं हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि हाँ, कि एक रीडिंग की क्या कार्मिक इम्प्लिकेशंस होती हैं। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ मेंटल इम्पैक्ट पड़ता है, ये इससे ना आपके कर्म वो सब भी खराब होते हैं। ठीक है, जब भी आप रीडिंग लेते हो, देखो कई रीडर्स आपसे लाइक करवाते हैं, है ना, कई रीडर्स सिर्फ पेड रीडिंग्स करते हैं। क्यों? क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज होता है। उसको न्यूट्रल रखने के लिए कई लोग सिर्फ लाइक्स करवाते हैं, ठीक है, कई लोग पे करवाते हैं, कितना भी कर लो, है ना। तो एक वो हो जाता है कि कई बार रीडर्स जब खुद को करेक्ट वे में रेगुलेट नहीं कर रहे हैं, उनके पास क्या होता है, कई बार कामिक हुक्स आ जाते हैं, एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं उनके, जो खुद उनकी एनर्जी ख़त्म करने जा रहे होते हैं। कई बार वो खुद अनस्टेबल होते हैं, है ना। तो जब आप कंसेंट देते हो कि हाँ मेरे लिए रीडिंग करो, वो एनर्जीज़ को आपकी एनर्जी की एक्सेस भी मिल जाती है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही आपको डराने के लिए, ठीक है, मैं आपको समझा रही हूँ, आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ कि बाबा ये सब भी होता है। ठीक है, ताकि आप अब खुद के लिए एक सही रीडर चुनो और खुद समझ पाओ कि ना, मुझे सबसे रीडिंग नहीं करानी है, जो रिलायबल है उसके पास ही जाना है। ठीक है, अगर आप एक गलत रीडर के पास जाते हो ना, तो आपका वाइब्रेशन जो है वो लो हो जाएगा, आपका डिसीजन मेकिंग ख़राब हो जाएगा, आप ना गलत एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करने लगोगे अपनी तरफ। ठीक है, भले ही जब तक रीडिंग होती है ना, रीडर का एक्सेस तब तक ही होता है आपका। ठीक है, लेकिन आपकी एनर्जी ऑलरेडी ड्रेन हो जाएगी, है ना, आप ऑलरेडी थके रहोगे, और जो बोलते हैं ना कि जैसा महसूस करते हो वैसे ही आपके पास आता है ना। तो आप लो वाइब्रेशन में हो गए, इसलिए आपके साथ और बुरा बुरा होने लगा। कई लोग बोलते हैं ना कि अरे बाबा, इससे दूर रहकर, इनसे दूर रहना, उनसे दूर रहना, इसके पास गए तो सब बुरा ही होता है। क्यों बुरा होता है? कोई उतना महान नहीं है, कोई उतना स्ट्रांग नहीं है कि वो कुछ, वो उसके आसपास रहने से आपको कुछ गलत हो। ठीक है, उसके आसपास रहने से आपकी खुद की स्पिरिचुअल जो प्रोटेक्शन होती है वो कम हो सकती है। इसके कारण जो नॉर्मली जो चीज़ें आप ध्यान भी नहीं देते थे, वो भी आप पे असर करने लगती है। ठीक है, अम, तो ऐसा नहीं है कि लाइक बस एक रीडिंग की तो सिर्फ वहीं तक सीमित है कुछ भी। ठीक है, इनकी आपके कर्म पर, आपके एनर्जेटिक फील्ड पे भी असर पड़ता है। ठीक है, अब देखते हैं रेड फ्लैग्स इन अ रीडर कि क्या हरकतें होती हैं एक रीडर की, जिससे आप समझ सकते हो कि ये रीडर से रीडिंग नहीं करानी है।
ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, है ना, वो ईगो वाली बात जब आती है ना कि मैं ही करूँगा, यही करूँगा, मुझे ही पता है, ये इज़ अ रेड फ्लैग। ठीक है। अगर वो उतना ही स्पिरिचुअली एडवांस होता कि खुद को भगवान से कंपेयर कर रहा है, खुद में भगवान दिख पा रहा है वो, तो क्या वो ऐसे बात करता, है ना? नहीं करता। और कई बार क्या करते हैं ना, रीडिंग्स कराते हैं और बोलते हैं कि उम, कि ना मैं तुमको ठीक कर दूंगा, तुम पे ना इसका साया है, उसका साया है, मुझे इतने रुपए दे दो, मैं ऐसे छट करके भगा दूंगा। ठीक है। दैट इज़ ऑल्सो अ रेड फ्लैग। जो आपको डर से, आपको कहानियाँ बनाकर आपको कुछ बेचा जा रहा है, तो आप समझ लेना कि ये रीडर आपके लिए गलत है। जैसे मैं बोल रही हूँ ना कि हर रीडर एक जैसा नहीं होता, तो कई जेन्युइन रीडर्स भी ऐसे काम कर सकते हैं, तो एक बार पूछ लेना, कंफर्म कर लेना। ठीक है। आप जितना क्वेश्चंस पूछोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि रीडर जेन्युइन है या फेक है। ठीक है। ट्रांसपेरेंसी, कि वो रीडर आपको ओपनली बता रहा है या सिर्फ ऐसे ही बोल रहा है कि नहीं नहीं मैंने बोल दिया ना, ऐसा। ठीक है। जैसे कि मैं देखो कार्ड्स नहीं दिखाती मेरे, क्यों? क्योंकि मेरी माँ सामने बैठती है, मेरे माता रानी बैठती हैं, उनकी मूर्ति मेरी प्राइवेट मूर्ति है, यहाँ तक कि मेरे मम्मा पापा ने भी नहीं देखी है वो मूर्ति। ठीक है। तो वो जब उन्होंने नहीं देखी, मैं इंटरनेट पे कैसे डाल दूँ, है ना? लेकिन अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हो, मेरे स्ट्रीम में आते रहते हो, तो आप जानते हो कि अगर कोई मुझसे पूछे कि मुझे क्या कार्ड आया है, मैं बताती हूँ कार्ड्स, है ना? वो एक ट्रांसपेरेंसी होती है। आप मुझसे पूछो मैं कैसे रीडिंग कर रही हूँ, मैं बता दूंगी, है ना? तो सीक्रेसी नहीं, ट्रांसपेरेंसी। ये नहीं कि सब कुछ छुपा के बैठा है आपका रीडर। आप अगर रीडर से जेन्युइन क्वेश्चंस पूछोगे और वो आपसे छुपा रहा है, तो वो है रेड फ्लैग। ठीक है। ऐसे रीडर से दूर रहना। रीडर अगेन जो बाउंड्रीज नहीं रखता। ठीक है। जो सबको बोलता है कि सबको ऐसे समेट के रखा है कि कैसे एक्सप्लेन करूँ मैं ये कई बार ना कुछ रीडर्स क्या करते हैं इज एकदम से ना ऐसे रैंडम मैसेजेस देते हैं। आई मीन कई बार मैसेजेस आते हैं जो ज़रूरी होते हैं, है ना? लेकिन वो कैसे मैसेजेस देते हैं जो आप में डर पैदा करे, ठीक है, जो आपको कंफ्यूज करे, है ना? ऐसे रीडर से दूर रहना है, क्योंकि देखो रीडिंग क्यों लेने आए हो आप? ताकि आपको क्लैरिटी मिले। ठीक है। क्लैरिटी क्या है? अंधेरे में एक दिए जैसा होता है ना? लाइट फ्लिकर। ठीक है। आपको अंधेरे में लाइट आने से डर लगेगा या क्लैरिटी मिलेगी, है ना? तो अगर आपको रीडर अपना डरा रहा है या आपको ऐसे कंफ्यूज कर रहा है, तो ऐसे रीडर से भी दूर रहना है। ठीक है। वो रीडर से कुछ भी पूछ लो आप, कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा जवाब दे देगा। ठीक है। बाउंड्रीज मेंटेन नहीं करेगा वो रीडर। ऐसे रीडर्स से भी दूर रहना है। ठीक है। वो बार बार आपको यही बोलते हैं कि मैं ही हूँ जो तुम्हें ठीक कर सकता हूँ, या यही रास्ता है जो तुमको ठीक कर सकता है, या कुछ भी ऐसे आपको फील कर रहा है कि आप उसके बिना कुछ भी नहीं हो। ठीक है। रेड फ्लैग। इनमें क्रेडिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी ना हो। ठीक है। जो रीडर्स ऐसे बताएं कि मेरे पास ही, आप उनके पास जाओ, ठीक है, जब तक उनका फ़ायदा निकल रहा है तब तक बोलेंगे कि मैं बेस्ट रीडर हूँ, ये हूँ, वो हूँ। या आप उनको कुछ गलत बोल दो तो पागलों की तरह एक्ट करेंगे, है ना? कि नहीं मेरे से तो गलती हो ही नहीं सकती, तुमने ही कुछ गलत किया होगा, तुमने ही गलत मैनिफेस्ट किया होगा, तुमने ही गलत क्वेश्चन पूछा होगा, है ना? अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आई मीन जेन्युइनली कई बार होता है ऐसा कि आप लोग गलत क्वेश्चन पूछते हो, गलत चीज़ याद रह जाती है, या
आपने किसी और से पूछा और आके लड़ किसी और से रहे हो, ये सब होता है, ठीक है। नाउ दीज आर इंडिविजुअल केसेस, लेकिन इन जनरल में अगर आपका रीडर खुद की गलती नहीं मान रहा है, आपको बार बार डरा रहा है, खुद से ही बांध के रखना चाहता है, तो वो रेड फ्लैग है, ठीक है। ऐसे रीडर्स से बाबा दूर रहना चाहिए। नाउ हम बात कर चुके हैं कि कैसे रीडर्स से दूर रहना है, अब देखते हैं कि कैसे रीडर्स को चुनना है, ठीक है। अब ऐसे रीडर्स को ढूंढना है जो ओपनली कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। आप कुछ क्वेश्चन पूछो, वो जवाब देंगे। अब ऐसे क्वेश्चंस नहीं कि आप उनके बैंक डिटेल पूछो और फिर बोल रहे हो कि भैया हमने तो सुना था कि ट्रांसपेरेंसी है, तो सही रीडर है, आप तो नहीं बता रहे मुझे। देखो ये गलत बात होती है ना। अगर आप पूछ रहे हो कि आप कैसे रीडिंग करते हो या ऐसी सब चीज़ें, और वो बताते हैं, तो दे आर अ गुड रीडर, ठीक है। अगर उनसे कुछ गलती होती है तो वो ये मानते हैं कि हाँ मुझसे गलती हो सकती थी, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी है कि हाँ मैंने किया, मैंने बोला, है ना। फिर होता है एक एथिकल एंड मॉरल कंपस, जैसे मैंने बोला ना कि अम, कई बार रीडर्स ऐसे ईगो में आके थोड़े पागलों की तरह हरकतें करते हैं, है ना। तो इसका एक टर्म भी होता है स्पिरिचुअल साइकोसिस, कि मैं ही भगवान हूँ या कुछ भी, मन घड़त कहानियां बनाना, उससे आप लोगों को बांध के रखना, है ना। ये सारी चीज़ें एक एक्चुअल मेडिकल कंडीशन है, मेंटल कंडीशन है, ठीक है। तो एक ऐसा रीडर जो आपको बता सके कि सही क्या है, गलत क्या है, और वो ऐसा नहीं है कि आपको बोल रहा है कि भैया शराब मत पियो, तुम्हारे लिए शराब अच्छी नहीं है, और खुद जाके पी रहा है ना। जो खुद की बात मानता हो, जो अपने मॉरल्स पे चलता हो, और एक बहुत एथिकल रीडर हो, कि ऐसा भी नहीं कि आजकल मैंने बहुत देखा है कि कोई भी अंडू पंडू आ जाता है, मैंने ये भगवान को सिद्ध किया है, ये किया है, वो किया है करके मन घड़त कहानियां बनाता है, ठीक है। ऐसे उल्लुओं के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। वो बोलते हैं कि हाँ मैंने इनका ये किया है, वो किया है ना। जिनके जो स्पिरिचुअल एंकर्स हैं, ठीक है, जो भगवान से कनेक्ट करते हैं, जिस भगवान से कनेक्ट करते हैं, वो जेन्युइन भगवान हैं, जेन्युइन गाइड्स हैं, तो है ना, जिनके बाउंड्री स्ट्रांग हों। जैसे कि सोचो आप मेरे स्ट्रीम में आते हो, है ना, आप लोग मुझे अपनी एनर्जी के साथ ट्रस्ट करते हो, है ना। अब सोचो मेरी स्ट्रीम में कोई ऐसे फालतू इंसान आ जाए, है ना, तो मैं एज अ रिस्पॉन्सिबल स्ट्रीमर उसको निकाल दूंगी। क्यों? क्योंकि वो आप लोगों की एनर्जी खराब करेगा ना। आप लोगों ने मुझ पे ट्रस्ट करके आए हो मेरे पास, है ना। और अगर मैं आपके वो एनर्जी की रक्षा नहीं कर सकती, तो मेरा फ़ायदा ही नहीं है, मैं वेस्ट हूँ, है ना। तो ऐसे बाउंड्रीज जो एस्टैब्लिश कर सके, जो एक कम्युनिटी का एनर्जी खराब कर रहा है, उसको हटा सके, जो आप लोगों के लिए स्टैंड ले सके, ठीक है। फिर जो रीडर के पास जेन्युइन नॉलेज हो, ठीक है, जो रीडर जेन्युइनली ऐसे लगता है। फिर आता है एक्चुअल नॉलेज, नॉट जस्ट ड्रामेटिक वाला बिहेवियर, ठीक है, एक रीडर का जो जेन्युइनली आपको इन्फॉर्म्ड डिसीजंस बनाना बता रहा है। ऐसा ही नहीं कि कोई मन घड़त कहानी बना रहा है, या ऐसी नहीं कि बहुत ना अनरियलिस्टिक चीज़ें बता रहा है आपको, ठीक है। बहुत ही ना रियलिस्टिक चीज़ें बता रहा है आपको, ऐसा नहीं कि हाँ आप कल अंबानी बन जाओगे टाइप स्टोरी सुना रहा है, ठीक है। ऐसा रीडर जो काम हो, ठीक है, जिसके पास जाके आपको भी भले ही वो गलत या गलत नहीं, भले ही वो कुछ दुखी चीज़ सुना दे। सोचो आप गए थे उसके पास पूछने कि मेरा बॉयफ्रेंड वापस आएगा क्या, उसने बोला नहीं आएगा, लेकिन आप ना वो रीडर के साथ सेफ फील करते हो, ठीक है। भले ही वो रीडर आपको वो नहीं बोल रहा जो आप सुनना चाहते हो, लेकिन आप जानते हो वो रीडर के साथ आप सेफ हो,
ठीक है, आप काम फील करते हो वो रीडर के साथ। ठीक है, और एक पॉइंट होता है, वो रीडर जो आपकी रीडिंग को आप तक ही रखे। ठीक है, कई रीडर्स क्या करते हैं ना, हमेशा खुद तक ही ला लेते हैं। जैसे मैंने बोला ना कि मैं फिक्स कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, है ना, वो एनर्जी नहीं ले। जो रीडर का मेन फोकस हो कि आपकी मदद कर सके, वो आपको सही पाथ पे ला सके। ठीक है, नाउ अगर आप एक रीडर हो और आप वो रेड फ्लैग्स वाली लिस्ट में आ चुके हो, डोंट वरी, मैं भी आई थी पहले। देखो पापा, गलतियाँ सबसे होती हैं, उससे आप गलत इंसान नहीं बनते। ठीक है, आप खराब रीडर नहीं हो, आप बस सीख रहे हो कुछ चीज़ें। ठीक है, देखो मैंने भी गलतियाँ की हैं। आप अगर मेरे इंस्टाग्राम पे जाओगे, आप रिव्यूज़ पे क्लिक करोगे, आपको बुरे रिव्यूज़ भी मिलेंगे। ठीक है, आई थिंक ज़्यादा नहीं है, लेकिन आई थिंक मुझे 4 लोगों ने बोला था कि मैं रेजोनेट नहीं कर रही हूँ, या मैंने कुछ बोला और वो नहीं हुआ। ठीक है, और उनके रिव्यूज़ हैं मेरे उसमें। क्यों? क्योंकि आप लोग देखो, ट्रांसपेरेंसी, मैं कुछ छुपा नहीं रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही कि मैं 100% एक्यूरेट हूँ। ठीक है, गलतियाँ सबसे होती हैं, शायद मैंने ही गलत इंटरप्रेट किया होगा, है ना। कई बार मैंने रीडिंग्स की और मुझे लगा कि नहीं, मैंने ये इंसान के साथ गलत किया, मैंने पेड रीडिंग्स रिफंड कर दी। ठीक है, गलतियाँ सबसे होती हैं, पॉइंट ये होता है कि हम सुधारने के लिए क्या कर रहे हैं। ठीक है, आपकी जो कम्युनिटी होती है वो आपके पास कितने बार आई है ना, आपके लिए वो आते रहते हैं, भले ही आप गलती करो, है ना। तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनके लिए बेहतर बनो। देखो, और गलती की बात की जाए तो देखो, उन लोग अपने टॉक्सिक एक्स को 50 बार माफ़ कर सकते हैं, तो हम दोनों को तो 1-2 बार तो माफ़ कर ही सकते हैं ना। तो इट्स ओके, गलती करना कोई बुरी बात नहीं है, गलती को सुधारना ज़रूरी है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि एक चुंगू मुंगू सी गलती हुई है तो आप रीडिंग ही छोड़ दो ना, ये गलत बात है। ठीक है, डोंट गिव अप ऑन योर सेल्फ। नाउ आई उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो भी बोला आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, आपको उससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, अम, उम्मीद करती हूँ कि आप आगे से अच्छे करेक्ट रीडर्स को खुद के लिए चुनोगे। ठीक है, और फिर मिलेंगे, है ना। या तो मेरे और एजुकेशनल वीडियोस पे, या मेरे टैरो वीडियोस पे, या मेरे लाइव स्ट्रीम्स पर, या मेरे कहीं भी, है ना। तो हाँ, आप लोग खुद का ख्याल रखो, हम मिलेंगे अगले वीडियो या लाइव स्ट्रीम पर। तब तक के लिए बाय बाय।